Chalo, let's begin. So, in previous lecture, we got done understanding about how exactly you have primary and secondary metabolites which are existing. Primary और secondary metabolites है वो किस प्रकार बनाए जाते हैं, क्या functional role है, वो basic पढ़े थे. Plus मेटाबोलाइट्स के अलावा हमने माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़ा था ना. If with all of that, today we would go ahead and understand about primary metabolites. In this entire chapter, we are discussing only primary metabolites and nothing else. Secondary metabolites we are not discussing. उसका पैराग्राफ वगैरह हम लास्ट लेक्चर देख चुके थे. उसका जो एक बॉक्स है that is important. We have discussed that already, right? We go ahead for primary metabolites in detail, and firstly we talk about something called as carbohydrate. Now, when we talk about carbohydrates, these are one which are composed of carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है, ये ऐसे chemicals है, organic chemicals है, which are said to be composed of carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है, and having their empirical formula as CnH2nOn, which can also be written as CnH2ON, or I can also write it as CH2ON. Either of these three will be correct. Are we clear up till here? Are we clear? समझे? जो carbohydrates होते हैं, they have certain basicness, which is they can be classified. They would be composed of minimum 3 carbon. कम से कम 3 कार्बन तो उसके पास होना ही चाहिए. जब 3 कार्बन रहेगा ना मिनिमम, तो ही हम उसको कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं. अदरवाइज वी वुड नॉट क्लासिफाई इट एज कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. कैन आई गेट सम एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? Go beyond. Glucose and fructose and galactose and etc. Let's try to form their structure. When we talk about glucose molecule, what is the chemical formula of glucose? C6H12O6. Pretty clear with us? Now this C6H12O6, which is the basic ones that we are having, इसका structural formula आता है हमें. You know how to draw the structure? नहीं, linear. Let's draw it. 6 कार्बन डाल दिए हमने. This becomes the structural formula for glucose molecule. ठीक है. Likewise, you also have something called fructose. सुने हो? उसका formula क्या है? Fructose will be same, C6H12O6. Right? So again, we bring up 6 carbon chain. इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा. Are we getting it? Yes or no? Now, if you notice in this particular structure, you have lots of hydrocarbon present over here. That is hydroxyl, not hydrocarbon, sorry. You have lots of hydroxyl group which is present over here. Can we see that? Yes. So that's why we also classify carbohydrates to be as polyhydroxy compound. We can call it as polyhydroxy compound. Now, depending on number of carbon atoms that it has, we can classify carbohydrate.
into three categories. You can have something called as monosaccharide, saccharide meaning sugar. You can have oligosaccharides, or you can have polysaccharides. Are we clear? So when we talk about first one, which is monosaccharide, split it up. Mono meaning? Saccharide meaning? So a type of carbohydrate which is composed of single unit will be called as monosaccharide. Okay, so when we discuss about monosaccharides, it is composed of single unit of carbohydrate, and thus it is classified to be sweetest in taste. They are very very sweet in nature. Apart from that, they are soluble in water and they are crystalline. What do we understand by crystalline? The crystal form. These are classified to be as non-hydrolyzable. Now, what do we understand by the term non-hydrolyzable? Anyone who knows apart from Siddhani, what is non-hydrolyzable? Split the term. Non matlab? Hydro. Lyse. Separate या to break. Able. Possibility or capability we say. Right? She is able to do so, meaning she has the capability of doing that, right? So, when I say non-hydrolyzable, it do not have the capability to get broken down with the help of water molecule. When you do not have the ability to get broken down with the help of water molecule, you classify that particular molecule to be as non-hydrolyzable. We call them as non-hydrolyzable. यानी कि वो कह रहा है कि इस पर्टिकुलर मोनोसैकेराइड्स को हम और आगे पानी के मदद से तोड़ नहीं सकते, जो झूठ है. अगर हम देखने जाए तो झूठ है. हम उसको तोड़ सकते हैं बेटा, लेकिन जब मैं उसको तोड़ूंगा ना तो वो वापस शुगर नहीं बनेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा बट कुछ और होगा. That's why it is said that it cannot be divided further into smaller unit of a sugar. It can be broken down but not into the unit of sugar. Are we clear? समझ पा रहे हैं हम बेटा? जैसे हम बचपन में पढ़े थे that the smallest indivisible particle that is existing on earth is atom. Meaning atom को आगे further हम divide नहीं कर सकते, सही? लेकिन फिर बाद में हमने ये भी देखा ना कि एटम जो होता है उसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है. एटम टूटता है तो इलेक्ट्रॉन अलग होता है, प्रोटॉन अलग होता है, न्यूट्रॉन. वी डिड स्टडी दैट. तो ये तो गलत बात हो गई ना. बट वो क्या बता रहा है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ अ मैटर विल बी एटम. मीनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल आर नॉट मैटर, दोज आर एट अ चार्ज. Likewise here, when we break down this monosaccharides further, they will not form any sugar unit, they will not form any carbohydrate, but they can get broken down. Are we clear? So this is classified to be the simplest unit. Now, they will have minimum 3 carbon and maximum 7 carbon in their structure. So depending on the number of carbon also you can further classify. Like for example, if it has 3 carbon, you will classify it to be as trio sugar. If it has 4 carbon, you classify it as tetrodes sugar. If it has 5 carbon, you call it as. If it has 6 carbon, you call it as. If it has 7, you call it as heptose या फिर septose. Depend. Are we clear? What will be the examples of each of them? When you talk about trio sugar, you have glyceraldehyde. Glyceraldehyde is the example of trio sugar. When we talk about tetrose sugar, you have erythrose as an example for it. When we talk about pentose sugar, you have ribose. Hexose में, and this will be zero
हेप्ट्यूलस। आर वी क्लियर? यस और नो? इसके अलावा हर मोनोसैकेराइड्स का, यहां पे वापस आ जाओ, देखो ये दोनों मोनोसैकेराइड है बेटा। अब इसमें ये एक अलग से फंक्शनल ग्रुप दिया गया है। कैन यू सी दैट? व्हाट इज दिस फंक्शनल ग्रुप स्टैंडिंग फॉर? बोलो। Whereas this is, ठीक है, that means every smallest unit of sugar can have either aldehyde group in them or ketone group. So depending on what functional group it has, we can name them accordingly. Meaning if they have ketone group, if they have ketone group, I classify that sugar to be of class ketose sugar. So ketose sugar का example बता दो एक मुझे। Fructose. Likewise, I can also have aldehyde. So I call it as aldose sugar. Example, glucose. Monosaccharides clear? Yes or no? Yes. Any doubts? No. Anything which is difficult? Anything that is tricky? All clear? Everyone? Pakka. आगे चलूं? Next we jump for something called as disaccharides. Now, what exactly is, sorry, you have something called as oligosaccharide, where oligo meaning few, saccharide meaning sugar. So this compound is composed of few sugar units. ठीक है, few मतलब कितने सारे? एक वाले को तो मोनोसैकेराइड कह दिया, यानी एक से ज्यादा और सात से कम, एक से ज्यादा और सात से कम वाले को हम कह देंगे ओलिगोसैकेराइड्स, जिनमें से हमें सिर्फ एक ही के बारे में जानना है, विच इज डाइसैकेराइड. When we talk about disaccharides, इनके properties are pretty much similar to your monosaccharide, which is what? Disaccharides will be composed of two simple units. Remember, when I say simple units, that means we are talking about a term called as monomers. तो हमारा क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है that two monomeric units combine to form, या two monomeric units of carbohydrate will combine to form. आ जाएगा आंसर अपने को. Single monomer of a particular sugar is called as, आसान बेटा. Multiple unit of monosaccharides will be called polysaccharide. You also call it as polymer. A chain of monomer will be called as polymers. So disaccharides दो monosaccharides से बने हैं, इनके properties भी same होंगे, which is what? They are sweet to taste. They will as well be water soluble in nature, and they will also be crystalline. They would be hydrolyzable or non-hydrolyzable. बताओ, हाइड्रोलाइजेबल या नॉन हाइड्रोलाइजेबल? श्रीश क्या बोलता है बेटा, क्या होना चाहिए? क्यों? वो नहीं पता, सब बोले हाइड्रोलाइजेबल तो हाइड्रोलाइजेबल. सर संकेत, तू भी हाइड्रोलाइजेबल बोला. हाँ, क्यों? क्योंकि सब बोले ना सर, तो मैंने बोल दिया. यस ईशान? Sir, because presence of two simple types of sugar. There are two types of sugar, तो Hydrolyzable है तो अलग. correct. With the help of water molecule, I can break down this compound and form a two simpler sugar unit, which is monosaccharides. यानी ये disaccharides से, so हम इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ के मैं दो मोनोसैकेराइड्स बना सकता हूँ, लेकिन मोनोसैकेराइड्स को तोड़ के और छोटा बना सकता है क्या? So my answer will become over here that these are non-hydrolyzable, but these are hydrolyzable. Are we clear? जय जाग रहा है. आज पीछे जाके क्यों बैठा है? आगे जगह हड़प लिया लोगों ने. चलो तो अच्छा लेट आया था ना आज. चलो, पीछे रहता है फिर भी लेट आता है इंसान.
चलो आगे बढ़े। अब क्वेश्चन है कि जब वो हाइड्रोलाइजेबल हो गया, कौन से बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तब जाके वो हाइड्रोलाइजेबल हो पाएगा। लेकिन उसके पहले बना तो ले बेचारे को, जोड़ने के पहले हम डिवोर्स का बात कर रहे हैं, उससे पहले जोड़ लेते हैं उनको। देखिए कैसे जोड़ेंगे हम उसको। सो इसी सेम ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं। विल मेक अ ग्लूकोज चेन फर्स्टली, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। This becomes the ring structure of glucose, which is where you have HOH, now दिख रहे हैं लास्ट बेंच पे क्लियरली। Now in this case this becomes your first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon and sixth carbon. Are we clear? Likewise यहां पे भी हो जाएगा first, second, fifth and sixth. Are we clear? अरे हाँ या ना, क्या नशे में बैठे, समझा के नहीं? रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब इस रिंग स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली सीन क्या होता है। आई वांट दीज टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू अटैच विद ईच अदर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसे बना, अगर उसलिए कंफ्यूज हो रहा हो तो छोड़ दो उस पार्ट को, वो केमिस्ट्री में तुमको पढ़ाया जाएगा कि स्ट्रेट चेन को रिंग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अभी उसके लिए स्ट्रेस मत हो जाओ कि ये तुमको याद भी नहीं रखना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। खाली समझ के लो कि क्या कैसे बन रहा है। अब इसमें क्या सीन होता है, जो ये पर्टिकुलर OH है और इधर वाला OH है, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन का, तो शिफ्ट हो ना, पूरा जगह खाली है। बैग के लिए बनाया है क्या वो? फेंक दे, किसका बैग है, फेंक दे। चल चल, अभी रिकॉर्डिंग चालू है। यू हैव OH and OH at both the places. इसका H gets removed और इसका OH gets removed, मतलब ये इतना पार्ट जो है वो निकल जाएगा। क्या निकला मतलब? Which is what? Which is, so this particular process, a procedure of removal of water can be called as dehydration. Yes or no? I can also call it as condensation. काय म्हणतात? कळतंय इकडपर्यंत? जागी आहे आपण? हो, चलो आगे क्या हो रहा है, निकल गया ना तो बॉन्ड बनेगा। अब सुनो कैसे बॉन्ड बन रहा है। ये फर्स्ट कार्बन था और ये फोर्थ कार्बन था, बराबर है। फर्स्ट और फोर्थ के इसमें इसके पास सिर्फ ऑक्सीजन है, यस और नो। ये ऑक्सीजन जो है वो बाजू वाले के साथ बाइंड हो जाता है, संगठन झालं, बाइंडिंग। So this particular bond which is so formed and seen over here is called as glycosidic bond. काय म्हणतात बेटा? ग्लाइको एसिडिक नाही रे गधड़े, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तेरा चश्मा दे उसको, हाँ वही वही वाला, और 4-5 है तेरे पास। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिसलं बेटा, शॉर्ट। अब इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को जो है अगर हमें थोड़ा और डिटेल में देखना होगा तो हम इसको क्या नामकरण दे सकते हैं। ये बॉन्ड किसके बीच में बना देविका, कौन से कार्बन्स के बीच में बना है? मस्त पालटी मार के बैठ गई, जीवन वाढतायत ना इकडे आम्ही। चला लवकर उभे राहून सांगा मला जरा, गुडघ्याचा उपयोग करा। अरे कौन से कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है उर्वा, कौन से कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है?
कौन से कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है? कार्बन का नंबर उधर लिखा है, आंखें है तो देखो, अकल है तो वापरो। दीक्षा, रियली? चेक जरा, 2 and 4 लिखा है। बाबा तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू करो वापस। This is 1, this is 2, this is 4, correct? हाँ? दिसलंच नाही, मग इकडे कशाला बसतात तुम्ही? आणि दिसलं ना तर सांगायचं ना सर दिसत नाहीये. The bond is between 1 and 4. So I can label this particular bond as फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है. आईयूपीएसी नेम पढ़ चुके, तुमको पता है कि एग्जैक्ट नंबरिंग कैसे दिया जाता है. डोंट मेक मी डू दैट. ठीक है. सो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में 1 के बाद जो मैं कॉमा श्रीश 4 और बाद में एक डैश, उस हिसाब से आईयूपीएसी बोल रहा हूं मैं. ठीक है. शॉक्ड हो गए, इधर कहाँ आईयूपीएसी नेम डाले सर? सर हाइड्रोक्सिल आना चाहिए ना, किधर है सर? बॉन्ड का आईयूपीएसी कहा मैंने? थ्रू कैमरा रुकने दे खाली. दिस इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. वी कॉल इट एज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अथर्व कंफ्यूज बोला सर अल्फा कहां से आया? नहीं बताने गए. जब दो शुगर के बीच में बेटा ऐसे वाला बॉन्ड जब बनता है तब हम इसको अल्फा बॉन्ड कहेंगे. ठीक है. अगर उन शुगर्स के बीच में ऐसे बॉन्ड बना तो हम इसे कहेंगे. ठीक है. फिर गामा नहीं होता, अल्फा और बीटा. हश, एक तो ऑलरेडी सुरेश सर का केमिस्ट्री, ऊपर से सिद्धार्थ सर का केमिस्ट्री, ये दोनों एसएस पीछे पड़े हैं. ठीक है. समझे? हमको बीटा बॉन्ड पढ़ने में कहीं पे नहीं है, खाली तुमको बता दूंगा कि इसके अंदर बीटा बॉन्ड होता है, कैसे बनता है वो नहीं है. ठीक है. ना ही अल्फा बॉन्ड कैसे बनता है वो है. इनफैक्ट जो भी हमने पढ़ा ना अभी तक वो कुछ एनसीईआरटी में नहीं है. तो क्यों पढ़ा रहे सर? बिकॉज जब तक तुमको बेसिक्स नहीं पता होंगे तो हम कॉम्प्लेक्स शुगर पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या कैसे बन रहा है. सो टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स शुगर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट सिंपल शुगर्स आर ना. So that's why we are studying this. ठीक है. In our NCERT we have only polysaccharides, nothing else. So ये सब हमको नहीं याद रहा तो चलेगा क्या सर? तुम्हारे पे. तुमको नहीं याद रखना मत याद रखो, तुमको याद रखना तुम याद रखो. इट्स अप टू यू. ठीक है. ठीक है. समझा. मेरा लास्ट लेक्चर है. क्लियर है इधर? चले आगे. अब क्वेश्चन इज डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? आई डोंट हैव स्पेस ओवर देयर सो आई विल राइट इट हियर. ठीक है. डाइसैकेराइड्स के क्या क्या एग्जांपल्स आ जाते हैं? सो द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड दैट वी कैन अंडरस्टैंड इज लैक्टोज. वेयर डू यू फाइंड, चुप रहे, वेयर डू यू फाइंड लैक्टोज शुगर? सो आई कैन आल्सो thus call it as milk sugar. We can call it as milk sugar. What is lactose composed of? It is composed, it's a disaccharide, so it will be composed of 2 monosaccharides. बताओ कौन से? जय माता दी करो, आ जाएगा आंसर. ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. गुड अथर्व. इसके अलावा you also have sucrose which is existing. ठीक है. अब जब हम सुक्रोज का बात करते हैं, पता है ये कहां मिलता है अपने को? शुगर केन से मिलता है. वही शुगर है जो हम रोज खाते हैं बेटा, दाल चावल रोटी जिधर भी, जिसके अंदर शुगर डालते हैं अपन वो. ठीक है. भातामध्ये आपण कुठे टाकते? अरे नहीं डालते होंगे बेटा. बेसिकली खाने में जो शुगर यूज करते हैं वो. Sucrose is thus also called as table sugar. However, since we obtain it from sugar cane, you also call it as cane sugar. It can also be called as cane sugar.
सुक्रोज विल बी कंपोज्ड ऑफ, अब जय माता दी जबरदस्त वाला काम कर जाएगा, ग्लूकोज एंड इसी बंद है. Apart from this, we also have another example which is maltose, which is also called as malt sugar, यानी जिससे दारू बना सकते हैं. This will be composed of glucose plus, यानी वो जो स्ट्रक्चर उधर बना है वो किसका है? समझे बेटा? आर वी क्लियर? एनी डाउट्स? बोर्ड पे जो भी लिखा है उसमें से कोई भी चीज डिफिकल्ट? सब समझे? चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना, बिकॉज ये कोई भी चीज तुम्हारे एनसीईआरटी में दी नहीं गई है, पढ़ाया इसलिए जा रहा है ताकि तुम पॉलीसैकेराइड अच्छे से समझ सको, जो एक्चुअली हमारे नीट में या एनसीईआरटी में दिया गया है. आर वी क्लियर? चलो इस पे क्वेश्चन आएंगे क्या सर? यू नेवर नो, मतलब क्लासेस के टेस्ट में यू नेवर नो. Now, when we go ahead further, after oligosaccharides, we have something called as polysaccharides. Now, this is something which is given in our NCERT, so we need to understand this really very good. Polysaccharides, poly मतलब हाँ थोड़ा सा, poly मतलब saccharide मतलब, so this is basically a particular compound which is composed of multiple sugar. So this is said to be composed of multiple sugar unit. Are we clear? Yeah, which is polymer. Very good. So as we said over there that single unit is monomer, this will be Acha, when I have written here to be as monomer, that means there are two monomers. So ideally it is a dimer. Mono के दो, dimer. चल अतुल बोलते मैं ही हिल रहा है सर को. चलो अब जब हम पॉलीसैकेराइड्स का फर्दर बात करें, इनका और उनका प्रॉपर्टीज कंप्लीटली अलग है बेटा, absolutely different, which is what? This will be absolutely tasteless, no taste. That is soluble in water. This will be insoluble is a better term beta. That is crystalline. This will be amorphous. That is hydrolyzable. This will be still hydrolyzable. इसको तोड़ तोड़ के मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना. So this will be now depending on what type of, देखो ये चेन है बराबर. अब थोड़ा इमेजिन करो इसको, इमेजिनेशन, मोती का माला है. अब सब वाइट मोती है, दैट मीन्स इट इज सेम कलर माला. बट अगर मल्टी कलर हुआ तो इट इज मल्टी कलर माला. लाइकवाइज पॉलीमर having same monomeric units will be called as homopolysaccharide. So if a polysaccharide is composed of same monosaccharide unit, then I call it as. But if a polymer is composed of different, then I call it as heteropolysaccharides. Are we clear up till here? Any doubts? When we talk about homopolysaccharide, what are the examples of homopolysaccharides? The first example of I need you all to define this by yourself. First example for this is cellulose. नाम तो सुने होंगे. Cellulose is a long chain of glucose unit. यानी ग्लूकोज 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 ऐसा बड़ा चेन रहेगा ये,
ठीक है, और इस पर्टिकुलर ग्लूकोज चेन विल बी लिंक्ड बाय बीटा लिंकेज इंस्टेड ऑफ अल्फा लिंकेज, इट विल हैव बीटा लिंकेज। इसके अलावा सेल्यूलोज इज अ लीनियर स्ट्रक्चर, यानी सीधा चेन रहेगा ऐसा। सर ये कहां सीधा है भाई, लाइन में ही है ना, ये तो बीटा बॉन्ड हो गया ना। अपार्ट फ्रॉम दैट सेल्यूलोज का फंक्शन क्या है, दे आर पार्ट ऑफ cell wall. So can I say that it's a structural sugar? Which is involved in cell wall formation. Second example that we have is starch, which is also composed of glucose. Starch will have spiral structure. ठीक है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऐसा, स्प्रिंग जैसा, ठीक है। दिस इज द ओनली शुगर दैट गिव्स पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट। सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, नीट में काफी बारी आ चुका है, क्लासेस के टेस्ट में आएगा ही आएगा। सुनो क्या हो रहा है ये। When I say that it is a positive iodine test, what exactly is it forming for? What is it exactly doing? मैं बात करूं ना, अगर सपोज मैंने तुमको एक सैंपल दिया, ठीक है, मैंने सपोज राजनंदिनी अंजलि, मैंने सपोज अंजलि को एक सैंपल दिया, ठीक है, और मैं अंजलि को बोलता कि अंजलि इस सैंपल में से मेरे को आइडेंटिफाई करके दे कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं इसमें ना। आइडेंटिफाइंग कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट, देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट्स, बट इफ आई से कि नहीं मुझे स्पेसिफिकली जानना है कि इस पर्टिकुलर सैंपल में स्टार्च है या नहीं। So if I want to know whether starch is present or not, the easiest thing that she could do is she adds few drop of iodine. इससे क्या होता है सर, जैसे जैसे आयोडीन डालता है ना सैंपल में, आयोडीन इस स्टार्च के बीच में जाके फंस जाएगा, ये ना इसका कर्व्स, ग्रूव जिसे कह सकते हैं, उस ग्रूव में जाके फंस जाता है वो। जैसे वो ग्रूव में जाके फंस जाता है ना, उसका कलर चेंज हो जाता है। ओरिजिनली आयोडीन का कलर इज ऑरेंजिश ब्राउन, ठीक है, तो तुम कोई भी सैंपल में डालो अगर उसमें स्टार्च नहीं है ना, ऑरेंजिश ब्राउन ही रहेगा। बट जैसे ही स्टार्च उसको मिल जाता है वो पूरा ब्लूइश पर्पल हो जाता है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ब्लूइश कलर हो जाता है वो। Turning of bluish meaning starch is present. Are we clear? So now question that is framed is that they will give you an assertion stating that starch gives positive iodine test. Reason is they have a spiral structure. Both are correct with correct explanation. Starch gives positive iodine test, but cellulose failed to give positive iodine test. Assertion. Reason आ रहा है, starch has spiral structure whereas cellulose have linear structure. Both are correct with explanation. Did we understand? Yes. 5 मार्क्स मिलेंगे या दे रहे? 5 मार्क्स तुम लेके जा रहे हो या हम दे? लेके जाएंगे ना? हाँ आप दो सर, आप दो। अगर तू गलत किया तो -1 में लेके जाएगा ना। चलो, are we clear? So this gives positive iodine test. What is starch exactly? What is the function? Where do you find it? Very good. It is a stored food. Storage नहीं बेटा, stored food in plants. बराबर है? इसके अलावा we have another example which is glycogen. नाम तो सुने होंगे। Glycogen is also composed of glucose. This will have branched structure. मतलब कैसे सर, मतलब अगर ये ऐसा है तो कुछ ऐसे ब्रांचेस आते हैं उसको। How do I understand this? Let me just show that same thing over here. Is this done writing? Yes, no? Yes. खाली एक वर्ड इरेज करो, हाइड्रोलाइजेबल। अब इसमें क्या सीन होता है, ब्रांच में ऐसे है और फिर ऐसे जा रहा है, बराबर। तो ये जो लीनियर स्ट्रक्चर यहां पे अपने को दिख रहा है बेटा, दैट विल हैव सेम अल्फा 1,6 लिंकेज, अल्फा 1,4 लिंकेज जैसा होना चाहिए वैसा। बट ये वाला जो बॉन्ड है, ये
this bond will be different. How, sir? I would have another sugar like here. Glucose ही है ना? So another sugar like this. This is first carbon. First carbon gets bonded with the sixth carbon over here. Can you see that? So इस तरीके से वो ब्रांच हो जाता है. फिर ये सीधा 1,4,1,4,1,4. फिर वापस फर्स्ट और सिक्स लेंगे. फिर 1,4,1,4,1,4. Did we understand? ब्रांच कैसे बन रहा है? So ग्लाइकोजन में जब हम बता रहे हैं कि वो ब्रांच्ड है, याद रखना कि लीनियर के लिए इट हैज अल्फा 1,4 और ब्रांच के लिए इट हैज अल्फा 1,6. लास्ट बेंच पे दिख रहा है या जूम करूं? Branch will have alpha 1,6 visible, whereas linear will have alpha 1,4. Are we clear up till here बेटा? तुम फुल फॉर्म में लिखना, शॉर्ट में मत लिखना, मेरे पास जगह नहीं है इस वक्त. देन इसका क्या फंक्शन होता है? स्टोर्ड फूड इन क्लियर है बेटा? इसके अलावा इट हैज समथिंग कॉल्ड एज काइटिन. नाम तो सुने होंगे, व्हाटएवर यू प्रोनाउंस इट एज. जो काइटिन होता है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ नैग. वी नो व्हाट इज नैग? पता है अपने को. एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन. N-acetyl glucosamine, one of the component of peptidoglycan. We know what is peptidoglycan? Yes. Bacterial cell wall. ठीक है. अब काइटिन का फंक्शन क्या है? It's an exoskeleton for arthropods. It but also forms cell wall of fungi. Are we clear? Yes. Another example that we have is inulin. सुने हो कभी? इंसुलिन पता है सर? आप गलत लिखे सर, इंसुलिन होना चाहिए. नहीं, गलत नहीं है बेटा, इन्यूलिन ही है. ये एक कॉमन वर्ड है जो मार्क्स लेके जाता है तुम्हारा बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, जहां पे तुमको पूछा जाता है फाइंड द ऑड वन आउट. इन्यूलिन और इंसुलिन का स्पेलिंग ना हम डिस्टिंग्विश करने में थोड़ा मार खा जाते हैं. इससे जब कभी भी ऐसा कुछ टर्म आता है 2 सेकंड रुक जाना, समझ लेना, ध्यान से देख लेना ऑप्शन को क्यों क्या है, इंसुलिन है या इन्यूलिन है. ठीक है? बिकॉज अभी रिसेंटली 12th स्टैंडर्ड को सेम चैप्टर का टेस्ट एंड देव मेड मिस्टेक. मेजॉरिटी ऑफ देम हैव मेड मिस्टेक. ठीक है? सो मेक श्योर दैट यू ऑल डोंट रिपीट दैट. इन्यूलिन इज अ टाइप ऑफ शुगर दैट इज फाउंड इन प्लांट्स. कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें स्टार्च की जगह पे इन्यूलिन स्टोर किया जाता है. अब इसका क्या फायदा है सर? ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं बता रहा हूं तुमको, सुन लो ताकि पता चले. पहली बार सुने हो ना. इन्यूलिन एक ऐसा केमिकल है विच इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज. किसका है? यानी फ्रक्टोज से बना हुआ चेन है ये. फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर दैट इज एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ. सबसे स्वीट कोई शुगर है तो वो फ्रक्टोज है. इसलिए जब हम डाइट करते हैं या फिर हम उपवास करते हैं तो हम फलहार खाते हैं. अब फलहार में तुमको तो काफी चीजें खाते हैं हम, पोटैटो चिप्स वगैरह. दोस आर नॉट फलहार. फलहार इज फल खाना. ठीक है? अब दैट फल हैज लॉट ऑफ शुगर विच इज फ्रक्टोज. एवरी फ्रूट हैज फ्रक्टोज इन देम and that's why that does help you in gaining some energy in your body. Now what happens is, instead of starch it has inulin present inside it, and that inulin is composed of fructose, which is the sweetest sugar. So when you taste it, when you eat it, all of them are tasteless except inulin. Inulin gives you sweet taste. अब जो डायबिटिक पेशेंट रहता है उसको स्वीट्स खाना सख्त मनाही होती है. They cannot eat sweet, है ना. अब क्योंकि वो स्वीट नहीं खा पाते हैं तो उनको सबसे ज्यादा उनको ही खाना होता है स्वीट, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू ईट. ह्यूमन टेंडेंसी. मैं अथर्व को बोला ना, अथर्व पीछे मत देख, फट से पीछे देखेगा वो, मना क्यों किया करके, कुछ वैसा. देख, लाइकवाइज
लाइकवाइज डायबिटिक पेशेंट को अगर तुम बोलोगे ना कि तुमको स्वीट नहीं खाना, तो अभी सबसे ज्यादा उनको ही खाना है। स्वीट तो खा नहीं सकते बिकॉज ग्लूकोज इज नॉन डाइजेस्टेबल इन देयर बॉडी। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन दे ईट इन्युलिन दे गेट स्वीट टेस्ट। बट सर वो तो हेल्थ के लिए गंदा हो गया, उसको स्वीट नहीं खाना चाहिए। अच्छा है उनके लिए, क्यों? स्वीट टेस्ट चाहिए था, वो मिल गया। बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम है ही नहीं जो इन्युलिन को डाइजेस्ट कर सके, इस वजह से वो हमारे बॉडी से एज इट इज बाहर निकलता है। एग्जैक्टली लाइक सेल्यूलोज, we don't have any enzyme for breaking down cellulose, likewise we don't have any enzyme for breaking down inulin. So ये तो दोनों बातें होगी ना, स्वीट टेस्ट भी आ गया, बॉडी में एब्सॉर्ब भी नहीं हुआ, so we are sorted. Inulin clear? So these are all examples of homopolysaccharides. When we talk about examples of heteropolysaccharide, you have first example which is hyaluronic acid. सुने होंगे? हाँ, whatever, it's hyaluronic acid, जैसे तुमको प्रोनाउंस करना वैसा कर सकते हैं इसको, ठीक है। Hyaluronic acid is something which is found in your connective tissue and this is one of the important ingredient of cosmetics. एंटी एजिंग क्रीम्स होते हैं, उसमें hyaluronic acid होता है ताकि तुम्हारा स्किन टाइटनिंग कर दे वो, ठीक है, एंटी एजिंग की तरह। इसके अलावा ना ये किस किस चीज से बना है वो हम नहीं लिख पाएंगे, व्हाई? बिकॉज मल्टीपल चीजों से बना है ना, एक शुगर नहीं है, ये सारे एक एक ही शुगर से बने। कौन से वो लिख चुके हैं हम। देन यू हैव समथिंग लाइक हेपारिन, नाम सुने? एंटीकोएगुलेंट, इट इज आल्सो अ शुगर। देन यू हैव पेप्टिडोग्लाइकिन, you have peptidoglycan which is also a heteropolysaccharide. Are we clear? Peptidoglycan is a component of cell wall of bacteria. Are we clear? Everyone? Any doubts? All sort? ठीक है, हाँ, that's a different scenario, that will come in lipid, not here. बताता हूँ। Did I say done with the chapter? पढ़ेंगे, चलो। पॉलीसैकेराइड्स क्लियर है बेटा? एवरीवन? एनी डाउट्स? जस्ट वन थिंग एक्स्ट्रा दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक्स्ट्रा नहीं मतलब एनसीईआरटी में दिया है, पर एनसीईआरटी में एक ही लाइन में खत्म किया है, हम थोड़ा उसको बेहतर तरीके से समझेंगे ताकि केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट इधर ही हो जाए अपना। सुनो क्या होता है, जो शुगर होते हैं ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने अंजलि को सैंपल दिया था और बोला शुगर टेस्ट करके दिखा, मतलब जस्ट चेक एंड लेट मी नो। नहीं, शुगर बराबर बोला मैं। सैंपल देने के बाद मैं उसको बोल रहा कि इसमें चेक करके बता कि शुगर है या नहीं। देन आई वेंट स्पेसिफिक फॉर स्टार्च। अब उसको चेक करना है उसमें शुगर है या नहीं। देयर आर टू रिएजेंट्स दैट शी कैन यूज, वन इज बेनेडिक्स एंड वन इज फेलिंग्स। दो ही है, दोनों साइंटिस्ट के नाम पे रिएजेंट बने हैं, ठीक है। अब इन सैंपल्स में बेनेडिक्स में देयर इज कॉपर, फेलिंग्स में देयर इज आयरन व्हिच इज एग्जिस्टिंग। व्हाई आर वी यूजिंग दीज एलिमेंट्स ओनली? बिकॉज शुगर जो होते हैं बेटा, those can be classified as reducing or non-reducing sugar. What exactly it is, sir? How does it happen? देखो, ये मेरा शुगर हो गया बेटा, कुछ ऐसा, first carbon and fourth carbon. Obviously, these are the ends of sugar. I don't say these are the ends, I say these are the ends because ऐसे चेन बन रहा है, ऐसे नहीं. So these are the ends of sugar. This is right end and this is बराबर. अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो शुगर होता है उसके पास या तो कीटोस ग्रुप होगा या तो अल्डिहाइड ग्रुप होगा, या तो कीटोन या फिर अल्डिहाइड. Now both of them, whether it is ketone or aldehyde, have double bonded oxygen present in them. बेटा yes or no? Yes. This is that oxygen, functional group wala. Now this oxygen has a direct binding with first carbon. That is why the hydrogen or electron of the first carbon gains that power that whenever it finds any of these elements, it will release those electrons and bind to them. नहीं समझे? जब कभी भी फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड, सॉरी, द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल is attached to the first carbon, because of which this first carbon
tends to undergo certain conformational changes leading to release of electron or proton, whatever you call it as. Shrish, ध्यान इधर, release of electron or proton यानी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा या फिर हाइड्रोजन, और वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कॉपर या आयन के साथ बाइंड हो जाता है, जिस वजह से कॉपर या आयन का कलर चेंज हो जाता है. जैसे ही उसका कलर चेंज हुआ, यू सेड द शुगर इज प्रेजेंट. कलर चेंज नहीं हुआ, शुगर इज एब्सेंट. आर वी क्लियर? डिड वी अंडरस्टैंड? यस और नो? आर वी क्लियर अप टिल हियर? डिड वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? अच्छा, हमारा एनसीईआरटी. अच्छा, इसमें ये बताओ, ये वाले से रिड्यूस हुआ ना, सो दिस एंड विल बी कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एंड. सो दिस एंड विल बी कॉल्ड एज बेटा नॉन रिड्यूसिंग एंड. सो हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन में हमें एक्सप्लेन किया है दैट ग्लाइकोजन हैज राइट एंड एज रिड्यूसिंग, लेफ्ट एंड एज नॉन रिड्यूसिंग. दैट्स इट, और कुछ नहीं. बट वो क्यों रिड्यूसिंग है, कैसे रिड्यूसिंग है, वी नीड टू नो दोस कॉन्सेप्ट्स, एंड दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल. Why only copper and iron? Why not anything else? Because, बोल जाए, you said something, you gave some reason. Why only copper and iron? Because these are the only best two elements that have a redox potential. What do you understand by redox potential? They have the potential to get oxidized as well as to get reduced. ठीक है, वो दोनों तरफ स्विंग कर सकता है. That's why you use them. Sort है everyone? Did we understood this concept of reducing, non-reducing? So as such, first carbon will be freely available in all monosaccharides. So सारे monosaccharides are called as reducing sugar. All monosaccharides are reducing sugar. What about di and tris, di and polysaccharides? देखो, हम इधर आ जाते हैं. यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, if you see this particular structure over here, first carbon is involved in glycosidic bond formation. Is it free for reduction reaction? No. So in that case, can I classify this sugar to be as reducing? Yes or no? I cannot call it to be as reducing. Why cannot I call it as reducing? Because it is involved in glycosidic bond formation. But then बेटा अक्ल लगाओ, ये मेरा शुगर हुआ या ये? अब ये हो गया ना मेरा शुगर. समझ पा रहे? अब तक ये था, this was my line and this was the end. But now I extended the line. So now this becomes my end and not this. Understood? यहाँ पे फर्स्ट कार्बन फिर से फ्री हुआ. So this sugar is सविता के बाजू में, सुनीता के बाजू में. What's your name बेटा? संस्कृति. This sugar will be reducing or non-reducing? फर्स्ट कार्बन जो है ये पूरा एक शुगर हो गया ना. Yes or no बेटा? पूरा एक शुगर हो गया. अब इस शुगर का फर्स्ट कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग होना चाहिए, वही पढ़े ना हम. तो फर्स्ट कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है क्या? तो इज इट रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग? जोर से बोलना. इट इज अ reducing sugar. Are we clear up till here everyone? So when do I call it as non reducing? इस हिसाब से तो सारे reducing हो जाएंगे सर. नहीं होते बेटा. There are lot of sugar which are non reducing because उनके दोनों first carbon will be involved in glycosidic bond formation. For example, non reducing sugar का examples हमें दो ही याद रखने. You have sucrose and starch. These are the only two examples that you'll need to remember as of for your 12th standard, which are non-reducing sugar. Are we clear? Yes. Everyone, did we understand this concept? Yes. Sorted, eh? So next lecture when we meet back again, we will go ahead with the next biomolecule. As of for today, we end understanding about carbohydrates completely. I hope entire carbohydrate is clear. Yes or no? Yes. Revise करके आना कल.